Hello guys, welcome back to my channel. As you saw in the last video that I'm alone in Tbilisi, Georgia, and I study MBBS here. So today I'm going to tell you why I chose MBBS, how I came here. So coming to the topic, why I chose MBBS. So from 7th standard मुझे डॉक्टर बनना था because I saw one doctor like in my family. I have my Jiju inspired for becoming a doctor since my childhood because I used to play doctor in my childhood. तो देन लाइक कमिंग इन 7th स्टैंडर्ड सब लोग पूछते थे क्या बनना है क्या बनना है क्या बनना है एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि मुझे डॉक्टर बनना है एंड देन when I came in my 12th standard, so that time COVID happened, so I was at home and I was preparing for NEET. like 11th 12th मैं NEET ही कर रही थी and I was purely a PCB student. Like I dropped my maths in the 11th itself right after my 10th. So I was only focused on this and I had two goals कि मुझे एक तो डॉक्टर बनना है या तो I will do the genetic engineering. I was very specific about that. Then uh, I gave my NEET exam, but NEET में इतना कुछ खास स्कोर नहीं आया था. So then I said my father कि मैं करूँगी तो MBBS ही, and my NEET score was not very good. तो उससे मुझे सिर्फ लाइक BHMS या BMS की सीट मिल रही थी. बट आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड कीन कि मुझे बस MBBS ही करना है. आई विल रिपीट द NEET. बट देन माई फादर सेड नो कोई ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की. We'll find some options. So we looked for many options in India as well, but ऐसे कोई मिला नहीं. But they were charging in crores और इतना पैसा कहाँ ही डालना था. So then my father came across this option of MBBS abroad. One of his friend's child was studying here in Georgia itself. So then he suggested me. Then I was very reluctant कि मुझे नहीं जाना है क्या, मैं अकेली कभी रही नहीं हूँ. So मुझे नहीं आना था because मैं कभी अकेली रही नहीं थी. लाइक आई ओनली मैं बस एक दो महीना अपने लाइक नॉट एक दो महीना भी लाइक एक दो हफ्ते ही मैं रहती थी. कभी किसी रिलेटिव के पास गई तो नहीं. तो आई यूज टू stay with my parents itself and no hostel experience और सीधा like coming to abroad living alone. And I was just a kid कि तब मैं कितनी like I was 2021. 2021 I guess. And then I was like no मुझे नहीं जाना है, मैं यही करूँगी, I'll repeat the NEET. But he was like quite firm on his decision. No, you will go, you will do it, I know, I have confidence in you, this and that. Then I also thought let's do it, let's give a chance. So I went to a consultancy. They gave me options of many countries. Then firstly हम लोग फिलीपींस के लिए ट्राई कर रहे थे, बट न्यू गैजेट केम राइट. लाइक मैं एडमिशन लेने जा ही रही थी एंड देन लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड कि मैं फिलीपींस में ही जा रही हूँ. एंड देन जिस दिन लाइक वी हैड टू गो एंड गिव आवर पेमेंट सो दैट माई एडमिशन इज कन्फर्म्ड, उसी दिन लाइक मॉर्निंग सुबह ही गैजेट आता है कि फिलीपींस NMC रूल फॉलो नहीं करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू NMC 54 मंथ्स का MBBS होना चाहिए था. सो दैट गैजेट केम एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लान वॉज ड्रॉप. देन हम लोग वहाँ वो फिलीपींस कैंसिल करके हम लोग दूसरी कंसल्टेंसी में गए. देन हमने जॉर्जिया का देखा. देन उन्होंने बताया कि इट इज़ द 8th safest country, this that. Then my father agreed and like they told me many universities, but my father's friend was in Grigol Robrikets University, so I wanted to take admission there itself. But they told नहीं वो नहीं, Alte is more good. So I took admission in Alte University here in Georgia, and this is how I came to Georgia. But I want to tell you one thing कि it doesn't matter how much you score, what you do. At last what matters is कि तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितनी शिद्दत से वो चीज़ पाना चाहते हो.
Like for me, being a doctor was always a dream, and now it's coming true. I'm in my fifth year and only like 1.5 year is remaining. Then I 1.5 saal but I'll go back to India. I'll live there, but I'll miss this place because now it has become my second home, and I really love staying here because this country has taught me many things, like how to manage my finances, how to travel. मैंने कभी इंडिया में लाइक आई डिड नॉट ट्रैवल फ्रॉम बस रिक्शा बिकॉज मुझे लाइक अकेले मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था. आई आई ट्रैवल्ड इन माई 11th 12th बट मैं तब स्कूटी से जाती थी एंड माई कॉलेज मेरा कॉलेज पास ही था. But now I travel anywhere, everywhere I can go. I have become more independent and a better version of myself. Georgia has given me more than what I thought, and I love Georgia. It will be always in my heart. Thank you.